वॉच लिस्ट में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देख लेते हैं. बाद में देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी. फर्स्ट इज अदानी पोर्ट. It's look like impulse correction and ready to impulse again. Another move to the upside. Resistance यहाँ पे है, major resistance. So once it's break out, I think it will go to the next resistance of 973. Let's check if multiple thing connect. 161 at 944. If it go to the lowest one, then 1003. If it is a larger trend, if we get the larger move, then 1003 is the next target. But for a short period of time, 950 or like between 944 and 950 can be the target. Keep eye on this ascending triangle there. We already in. हम लोगों ने पहले बाय कर लिया है यहाँ पे ही 899 पे. देखते हैं क्या होता है. मार्केट इज द किंग. एक्सो इंडिया इज another one. Generally prefer impulse correction. Most of my stock is like that and trending. मैं ये प्रीफर नहीं करता, लेकिन जो भी ट्रेड करते हैं और आई विल वेट फॉर. इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा. मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट करने के बाद शायद मैं वेट करूँगा कि साइड वे मूव दे एंड देन इट ब्रेकआउट. दैट आई विल वेट फॉर. राइट नाउ स्टिल लुकिंग सो बुलिश. सी दिस वाज द परफेक्ट. दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. Generally this one trending down even in a smaller time frame. I don't prefer that, but still looking good. Another one is Castrol. अगर ये वीक नहीं आती इतनी बड़ी, then it was a very good trade. I can't take this one. And GMMP4 एक बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है. इवन इन अ वीकली नियर ऑल टाइम हाई. See the impulse correction and ready to move to the upside again. Keep eye on this one. We have line draw already. I generally prefer if close about this. I'll watch for both of these. अगर यहाँ पे मुझे एक और दिन मिल जाए यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास एंड देन ब्लास्ट करे, देन दैट विल बी द बेस्ट. बट लेट्स we have it in a radar. The gap is too small, 50 points, so 2% gap there. Sorry. GPPL. breakout दे दिया इसने. Symmetrical triangle generally मैं ये ट्रेड नहीं करता. I like pennant pattern, any continuation pattern, but this is too much. It moved up, I think around 9 to 10% yesterday. Pull back. ज़्यादातर स्टॉक का यही हाल है. ब्रेकआउट पुल बैक हो रहा है ज़्यादातर में. IFLWM still in a range, very tight and very choppy stock. I can't trade in this one. Even the ADR is low, so no chance. 6KIL ये ब्लास्ट होगा. यहाँ पे मैंने थोड़े दिन पहले ही दिखाया हुआ था.
impulse correction and impulse again, but no volume in the market. There is no volume. Once it's break out 600k a few days ago, not even a million, and then reverse again inside bar. If it break to the upside, then we can see the another move to the upside, otherwise it will fall back. Maybe retest करेगा और उसके बाद वापस ऊपर जाने का चांसेस है. अगर यहाँ से नीचे गया, then keep on radar. NSIL, another range, impulse correction. Keep eye on this. So this is the horizontal entry level. 5 to 10% easy on down. NH. Very choppy. One push to the upside and then sideways. ADR is too low. Average daily range is too low. So ज़्यादातर क्या करता है, एक जंप लगा के वापस रेंज में आ जाता है. TNB sorry. TNB. New IPO stock above the opening IPO range. Keep eye on this one. G1, another good setup on a G1, very tight range. Intraday GMR Infra. 60-minute time frame. This is the range. Jubilant Farm. Few days ago ये डेली में भी था हमारे लिस्ट में. यहाँ पे impulse correction and impulse. KNR construction. 60-minute में देख लेते हैं. Range there but not quite. I like PNC infra. ज़्यादातर infra stock ही है 60-minute में. Sure. PNC infra. अच्छा. Okay. PNC infra. Bullish wedge pattern. Sorry, pennant pattern. Coffee choppy. I will ignore this one. No point. Sarda crop. Nice move. Quite nice. Ascending triangle making higher highs. You can see making higher lows and flat top. VCP pattern. Volatility contraction in 1 hour. Keep eye on this one. This can last. वीकली देख लेते हैं एक बार. About a 20 MA. 10 is still below 20. Still in a downtrend, but daily looks so good. Impulse correction.
Let's check where is the 200 EMA. 200 EMA. 100 and 200 we need to check where it's trending. Okay, 200 MA है 551 पे और about a 100 MA, so there are many supports now, 10 MA, 20 and 50, so this looks good. And we have 536 a previous support. This zone is very crucial. ये जोन जो है काफ़ी क्रूशियल है, यहाँ से ही उसकी बिकवाली शुरू हुई थी. Below the 200 MA, and then we had a divergence. See, this is the divergence. Price is falling, indicator is rising from the low, so that is divergence. So this can be a continuation to the trend. Keep eye on this one. The 60-minute time frame looks so good. Tata Coffee. Impulse तो नहीं कह सकता, लेकिन this move had 3 million buyers, 3 million shares, so we can get the continuation on a higher low. So there's higher low and flat top, so this can be a very good trade setup. Keep eye on this one as well. Tata Coffee looks so good. If I find the volume surge, then the normal, and that can be my entry. On a breakout. UBL already I think breakout दे चुका है वीकली में. में ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे, लेकिन ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई. This time it's facing resistance there, but now resistance becomes support because broke out of it. One day, I think too far away from 20 and 10 MA. I think it will come back to check support 10 or 20 MA, and then it will continue to go up. Now let's go to a 30-minute time frame. Check 3M India. Can't take this trade. No move, no trend there in a daily. No trend in weekly, so no point taking that trade. GMR infra काफी सारे सेटअप बन रहे हैं infra projects में. Weekly is bullish, daily is bullish. 1 hour also bullish. Look at all the trend. So don't take trade on a breakout this time. Wait for the close. Wait for the close outside this range in 1 hour or 30 minutes. If it happens, then take a trade with the volume. Volume is very must. Volume. Need the volume. Jubilant Pharma ऑलरेडी देखा है, लेकिन ये 30 मिनट में भी सेटअप दे रहा है. 1 आवर में भी सेटअप है इसका. ये 1 आवर का सेटअप था. 30 मिनट ऑलरेडी. God, can't take this trade too fast.
stop loss is too far. Can't take it. M&M 30-minute में setup. Nice tight range. Check with the weekly bullish. Only issue right now I'm having. This can be a continuation in a weekly or a head and shoulder. This is only my concern. And then दो धारी तलवार लग रहा है अभी ये वीकली में M&M. Has to hold this support somehow. If I take this one out, let's check there is a divergence there. There is a divergence. So this divergence, and now if we get another divergence, then head and shoulder will be confirmed. But for a short period of time, in a 30-minute, trend is still bullish. Another resistance, the next resistance is around दूसरा resistance 1310 के करीब है इस जोन में 1300 to 1320. तो यहाँ तक जाने के तो पूरे चांसेस है. If we break out of this range, sorry, तो काफ़ी चांसेस हैं. Keep on this Mahindra and Mahindra. Prince Pipe. Start with the daily 30-minute setup है. Impulse, correction, and another leg to the upside. Okay, so looks good. 10-20. ADR is low. If ADR is around 5-6, then could be very good. क्योंकि एवरेज डेली रेंज कम होती है तो मूवमेंट बहुत ही कम आती है. जल्दी फास्ट मूव नहीं करता. minute. So 3% is a normal move. 2.5% is a normal move. So यहाँ से ब्रेकआउट देके 1% तो यहाँ पे आराम से ले लेगा 1 और 2%. I'm not interested in 1 or 2%. लेकिन किसी को भी इंटरेस्ट हो इंट्राडे ट्रेड के लिए 30 मतलब इंट्राडे के लिए ये ट्रेड ले सकते हैं. लेट इट क्लोज आउटसाइड दिस रेंज. अगर ये यहाँ से इसके बाहर क्लोज हो गया देन वी हैव दिस MACD क्रॉस ओवर एज वेल एंड देन वी हैव मोमेंटम इन आवर फेवर एज वेल. सो मोमेंटम में हमारे फेवर में हो जाएगा. लाइकली वी कैन गेट. Another one is 3M India. We check. Let's check weekly auto. So no, there is a setup, but nothing right now. Devyani is pushing higher and lower. Fundamentally strong stocks. Earning is rising, revenue fell, but surprise is there. What I'm thinking is if we cross above
this 196 zone. 220 is easy for this. I think 220 can be the target easily. $226 there. So once you come out of this range, so many lines there. एक बार ये रेंज के बाहर ब्रेकआउट दिया. Can see the trend is that 10 and 20 is getting ready to burst. I'm looking for higher lows right now. That's lower lows. The pennant pattern is there. Trend is supporting 10 and 20 working as a support, and 50 MA also working as a support there. I'm looking for a breakout. Once it's breakout, we can see a new trend starting, just like this one. A wedge pattern, you can call it a wedge pattern, and then burst to the upside. How much? पिछली बार कितना बड़ा था वो भी देख लेते हैं. पिछली बार जो इसने मूव दिया था हाई से लो, could be 127 or 161. 127 is generally the key area. If it is an impulse wave, then it will go to 161 and plus. $268. So there is a chance 220, 221. I'm looking at this one. This one still 213 is a previous, and most recent को भी देखा जाए. और let's take extension, Fibonacci extension, crucial. I like this setup for holding. 270 is the first. If this is a ABC pattern or ABCD XYZ correction, let's see, then it has to go to 245. Anyway, even if it is a wedge pattern, if I connect these two, it also has to go to 220. So 1, 2, 3, 4 and 5. So in any case it has to come over here. If it is a Fibonacci wedge pattern, then Elliott wave wedge pattern, then it has to go there. Higher high, higher low, higher low, higher low, higher low, higher high. So it's uptrend. I'm keeping close watch on this one. Go Cats is the next one. Huge move to the upside, now correcting in a weekly. I want to see if it bursts to the upside, then new trend will start. If you get any setup in daily, sure we can get any setup in daily. Not yet. Edge infra. कल ब्लास्ट कर लिया इसमें. वीकली में सेटअप है. वीकली में हमारे वॉच लिस्ट में है. देन गोइंग टू ब्लास्ट सून. सो डेली में भी सेटअप था यहाँ पे. कल इसने ब्लास्ट कर दिया. मेरा ध्यान ही नहीं था इसके ऊपर. इंफ्रा पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, इसलिए ये इशू आ सकता है. इंफ्रा मदरसन सुमी. Weekly impulse correction and impulse again.
For long-term holding, you can count on this one. Fundamentally strong stock. Split again. अभी तो आया था, वापस स्प्लिट भी कर दिया. ओके, सो डेली में भी सेटअप है. Like a wedge pattern, falling wedge, impulse, correction and impulse. I don't like this because there is a seller still in the market, or maybe because of the split. This is confusing. This can create issue. Right now, looking very good, very strong. Can buy the stock at 62, 60, 50. Stop loss 6-7%. Trade with 1%. Trade with 1% and follow through. Go with the trend. If it close, if MACD cross lower and a crossover happen, अगर crossover होता है MACD में, then exit. Till then hold it. Next one, we'll look at Prism Johnson in a weekly. Weekly में impulse correction था. I was looking at this range, but it failed. Breakout fail हुआ. Daily में देख लेते हैं. Same. After this breakout, because daily and weekly मैच नहीं हो रहे. अगर डेली में देखा जाए तो ट्रेंड डाउन दिखा रहा है 50 MA के नीचे, और जब ब्रेकआउट हुआ इट वाजंट मैचिंग विद द IRCTC भी एक स्टॉक है, हमने यहाँ पे लिया था. स्टिल होल्डिंग इट ऑन अ वीकली बेसिस. आई थिंक सम न्यूज़ केम आउट यस्टरडे. Weekly breakout, back in range. You have this stop loss on. Let's see how it's going to work out. MACD is still popping. Momentum is still positive. There was a news yesterday, Indian government to sell up to 5% stake in railway unit. This was the news. But if they are selling, someone is going to buy it. Keep eye on this one. I think it has a potential to move big. We can get a big move. Getting support from 10 and 20 MA. 50 MA is still there. 50 MA का support resistance मिल रहा है. Once it's close clearly above all of those trend lines, EMAs or MAs, then I think we are good to go. We can see another move to the upside in IRCTC. Sunflag is another weekly setup.
broke out a few last week, but go back again. Go back in. Nothing right now in a daily. Swan energy. We already bought it. Got off cost to cost and it moved up to the upside. What a pain. जैसे ही हम निकले उसने भागना शुरू कर दिया. 259 पे लिया हुआ था, 56 पे आई थिंक 256 पे लिया. The moment we exited, it started moving up. यहाँ पे लिया था हमने शायद. This break up and it broke up. We bought over here sideways move. Nifty गिर रहा था. हमने सोचा maybe it's time to exit. We exited cost to cost and then it lost it. Never mind. Another one. Venditi. Weekly में hammer, pin bar, whatever you call that, bad sign. At the resistance, this zone is a resistance zone. And at that zone, making lower high, MACD is negative, so that also is a minus sign for that. Can't take a trade in that. Even in a daily, there is no setup right now. पहले था यहाँ पे, ये setup था पहले. Right now, no setup. Next one is GRPL Limited. In a weekly, near the all-time high. Yes. Ascending triangle. Daily में भी हम देखें making higher highs, higher lows. Since here making higher lows, cup and handle VCP pattern. Once it close out 1 hour में ध्यान रखना कि breakout पे trade नहीं लेना है. If it close above this range, close 1 hour में, then take a trade in a daily or 1 hour. डेली में लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. वेट फॉर द वॉल्यूम टू स्पाइक. अगर इंट्राडे में ब्रेकआउट के करीब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर जाने पे वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है, देन टेक अ ट्रेड. इफ वॉल्यूम इज लोअर देन अ प्रीवियस डे, डोंट टेक अ ट्रेड, बिकॉज देयर इज डाइवर्जेंस एज वेल. डबल टॉप का पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. देन आई थिंक wait for the close about this range, then take a trade. Back to Nifty now. $10.20 MA का सपोर्ट बन रहा है निफ्टी को. Bouncing from the support. Momentum is slightly negative right now. Check RSI and stochastic. There's a huge divergence. Few days ago I talked, huge divergence is there. This high to this high and this high to this high. Huge divergence. Market fell and then
20 MA, 21 EMA support or something there, and it bounced. If it make lower highs, अगर यहाँ कहीं पे रुक के उसने निफ्टी ने नीचे गिरना शुरू किया, then we can see if we and then break this range, then we can see the large amount to the downside. We can see 50 MA coming to the support. Then अगर यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाया, then new, जैसे कि कोई एग्जाम्पल, लाइक हियर, ऊपर जाने की कोशिश की, फेल कर दिया, न्यू हाई नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे भी डाइवर्जेंस था, सीरीज डाइवर्जेंस, एंड मार्केट फेल टू मेक न्यू हाई एंड देन ब्रेक डाउन. सो थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही है. डाइवर्जेंस जब भी होता है, इट डजंट मीन दैट मार्केट गोइंग टू टर्न अराउंड, और वी नीड टू बी केयरफुल. अगर पोजीशन साइज आप 1% ले रहे हैं तो 0.5% करके ट्रेड कर सकते हैं. ऑल मोमेंटम्स आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड, और यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है. बैंक निफ्टी ट्रेंड स्टिल अप, रिमेंबर दैट. 10, 20 EMA, 50 EMA, everything is pointing to the positive side. So we are not going against the trend, not taking any short trades. But if we get any bullish setup, then we will take that on. जब तक ट्रेंड ऊपर की तरफ है, बुलिश ट्रेंड है तो बाई ही करना है, बेरिश ट्रेंड है तो सेल ही करेंगे. Clear of trend. 10, 20 separated clearly. स्ट्रेट अप ट्रेंड. फेडरल बैंक का सेटअप था, फेडरल बैंक, HDFC बैंक भी सेटअप था, और है अभी भी फेडरल बैंक का. फेडरल बैंक फ्यू डेज अगो यहाँ पे सेटअप था, अभी भी है. HDFC बैंक, यहाँ पे हमने बताया भी था कि HDFC बैंक का ब्रेकआउट आ रहा है. मैं नहीं ले सकता क्योंकि ADR बहुत ही लो, 1.15% एवरी डे की एवरेज मूवमेंट है. इट्स नॉट वर्थ फॉर मी. बट इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स 100% 5-star सेटअप है ये. 10-20 EMA का सपोर्ट लेके वापस बाउंस किया, बहुत ही अच्छा सेटअप था. प्री मार्केट स्टार्टिंग इन 1 minute. गुड लक एवरीवन. Let's check the latest news. कल फेड मीटिंग थी, उसके अपडेट भी दे देता हूँ. FMC रेट डिसीजन भी था. SGX निफ्टी इंडिकेट म्यूटेड ओपनिंग, साइडवे ओपन ही होगा. US फेड रेट हाइक 50 BPS, कम किया 75 से 50 BPS पे, इन लाइन विथ एस्टिमेट्स. Global stock market, Dow was down 0.4%, S&P was down 0.6%, Nasdaq was down 0.8%, Shanghai down right now for 0.4%, Kospi down 0.9%, and Nikkei down 0.3%. Volume continue to remain lower. Nifty में volume बहुत ही कम है. Nifty closed near 18,650 on a sectoral front. Bearing Nifty as FMCG, all key indices close in a green. Nifty, IT, metal and realty advanced more than 1%. The broader market outperformed. Nifty closed 0.8% yesterday and 3.5% above its 21 MA and 50 MA respectively. आज के की न्यूज़ है, तमिलनाडु Mercantile Bank enters a corporate agency agreement with Kotak Mahindra General Insurance for marketing, distributions and selling general insurance products.
पावर ग्रिड का भी न्यूज़ है. पावर ग्रिड इंडिया डायरेक्टर पैनल अप्रूव्स रुपीज 330.61 crores इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान प्रोजेक्ट. State Bank of India board approves raising up to rupees 10,000 crores via a Basel III compliant debt instrument up to financial year 24. HDFC Bank hikes most retail term deposit rate by 40 to 75 bps. And now US Fed hikes interest rate by 50 bps in line with estimate, taking the target rate to 4.25 to 4.5%, the highest level since 2007. The median rate forecast for the end of 2023 is now at 5.1%. The FOMC statement retained a language that the ongoing hike will be appropriate to take the inflation back to 2% over time. SBI का सेटअप भी बहुत अच्छा है. ये लेटेस्ट न्यूज़ था आज के लिए. SBI ब्रेकआउट दे दिया कल. See all these ADR, low ADR, even a breakout, it won't give you much. If ADR is high, about 3, 4, 5, 6, that stock moves faster. Below 3, so 3% below, no point taking trade. ब्रेकआउट देगा, सब देगा, लेकिन मोमेंट इतना नहीं होगा. एज अ डिलीवरी ट्रेडर, इफ यू आर अ फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट एज अ कैश ट्रेडर, दिस वन वेरी मच. I'm going to mute for a bit. Look at the RV. Sahil Brands started again. Sir, Bank Nifty 452. We hold. I think market negative open होने के chances ज़्यादा है. But never take a trade against the trend. ट्रेंड के खिलाफ कभी भी ट्रेड मत लो. बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड है तो ट्रेंड के खिलाफ मार्केट को आप कभी बीट नहीं कर सकते, याद रखना. एक दो ट्रेड सही हो जाएंगे, ज़्यादातर आप लॉस ही करोगे. अभी तो नेगेटिव होने के चांसेस है. अगर पी होल्ड किया है नेगेटिव तो चांसेस है कि थोड़ा रिट्रेस होगा, लेकिन ओवरऑल इट विल कम आउट. जैसे ही मार्केट नीचे आएगा इट विल पुश अप. जैसे ही मार्केट नीचे आएगा इट विल पुश अप. सो अगर नेगेटिव होल्ड किया है तो जैसे ही नीचे आए बुक करो प्रॉफिट और निकल जाओ उसमें से. ओके, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करो. टॉप बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है, याद रखना. हाँ, 5 में से एक तुक्का लग जाता है, लेकिन अगर आपने बाई ही करते रहते लो से, जैसे आप अगर ट्रेंड बुलिश है और आप जैसे कि RSI ओवरसोल्ड है, ट्रेड लिया या स्टोकेस्टिक ट्रेड लिया बुलिश साइड पे, तो आपको कितने सारे ट्रेड मिल जाते हैं उसके हिसाब से. इंस्टेड ऑफ टेकिंग टॉप्स एंड बॉटम्स. 1 आवर में ले लीजिए, 15 मिनट में ले लीजिए. एवरी टाइम इट गोज डाउन यू बाय. एवरी टाइम इट गोज डाउन, अगर आप ट्रेंड है तो
आपने यहाँ पे ले लिया बाय, अगेंस्ट जाते हैं देन यू हैव मोर रिस्क अगेंस्ट द ट्रेंड। जब भी आप पैनिक हो जाओ समझ लेना आपको कुछ गलती हुई है। हाँ होल्ड करें अभी, टेम्पररी होल्ड करें अभी, अगर नीचे आता है बुक करिए और निकल जाइए। अब ट्रेंड में कभी सेल मत करिएगा। क्लियर अप ट्रेंड है, एकदम क्लियर, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। देखिए मे बी कम टू चेक 10 MA, क्योंकि जनरली क्या होता है, रिवर बैक टू इट मीन, यू रिमेंबर एवरी टाइम प्राइस गोज टू फॉर अवे फ्रॉम 10 and 20 इट विल कम बैक, वापस उसको 10-20 को टच करने के लिए। अगर ज़्यादा दूर जाता है तो सूनर और लेटर कभी ना कभी वो टच करने के लिए ज़रूर आएगा। जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही फास्ट वो नीचे आएगा। ये देखिए, टू फॉर अवे पुल बैक, टू फॉर अवे पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक। तो पुल बैक चांसेस है, लेकिन इससे अच्छा है कि उसके सपोर्ट पे बाय करें इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट, ये याद रखिएगा। देन यू हैव मोर सक्सेस रेशियो। 5 में से 1 की जगह 5 में से 3 या 4 जीतेंगे, 1 या 2 ही लूज करेंगे आप। एंड देन एंड ऑफ द ईयर यू आर ऑलवेज इन अ प्रॉफिट। एक आरवी वाली कौन है मैं दिखाना चाहता हूँ। आरवी दिस सेटअप लुक एट द एडीआर। ऐसे स्टॉक जो एडीआर हाई होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं। यू सी impulse correction every time, impulse correction, impulse correction. I can show you all of that. Impulse correction, impulse correction, impulse correction, impulse move, then correcting, impulse move, then correcting. This I cannot take because it went down 50 MA, everything was negative. But here impulse correction, here impulse correction. Again it's forming impulse correction. I will keep close watch on this one. Weekly all time high 40 वाला 30 रुपीज़ वाला स्टॉक आज 186 है, लेकिन इट डजेंट मैटर जब तक मोमेंटम में है। once it goes down below 10 and 20 MA then I will stop looking at it in a weekly। जब तक बुलिश ट्रेंड में है तब तक बाई करने की ही सोचे, ना कि मैं टॉप पकड़ने जाऊंगा इसमें। unless there is a divergence right now, but साइडवे है, साइडवे में डाइवर्जेंस फेड हो जाता है। बैंक निफ्टी आपके लिए so the sideway move, bank nifty, okay, slightly lower opening from 44,014 to down about 43,940। जो गैप उसने बनाया था वो फिल करने जा रहा है, ये गैप। ओके, तो बुक करें प्रॉफिट, टॉप बॉटम पकड़ने ना जाए। ट्राई टू कैप्चर द ट्रेंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द ट्रेंड। आप पॉजिटिव में हैं, ट्राई करें ट्रेंड के साथ रहें, बस और कुछ नहीं कर सकते।
IRCTC में गवर्नमेंट स्टेक सेल कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट टू सेल अप टू 5% स्टेक इन रेलवे यूनिट IRCTC. That's why it's falling down. Use indicator or not doesn't make any difference because most of the indicators are lagging. You need to find the best possible entries and exit. Main important thing stock market में एक ही चीज़ है, stop loss. Entry exit कुछ मायने नहीं रखता, stop loss ही सबसे important.